And in fact, Mirzapur se I understood that why does nobody is born evil. कोई पैदा वैसा नहीं होता है. आपकी लाइफ में इवेंट्स होते हैं, सिचुएशंस होते हैं, लोग होते हैं जो आपको थोड़ा कड़वा बना देते हैं, थोड़ा नाखुश बना देते हैं. Right. तो जब तक हम फिंगर्स पॉइंट करते रहेंगे कि ये ऐसा है वो वैसा है, तो कुछ हेल्प नहीं होगा, कुछ सॉल्व नहीं होगी. जजमेंट पास करना बहुत ईजी है. सो बीइंग एन एक्टर, स्पेशली विद मिर्जापुर, बिकॉज इट्स बीन 9 years, Yeah. मतलब 9 साल बहुत होते हैं. Yeah. So this relationship with the characters and especially Golu, it has left a huge mark on me, and I'm very happy about that because I love her. Yeah. I love her so much and I want to, मतलब मेरे बारे में कुछ भी कह लो, पर गोलू के लिए I'm very protective. पापा हमेशा 2 सवाल पूछते थे while growing up. One was कि बुक कौन सी पढ़ रहे हो, and second was exercise की नहीं की. And I've realized that these are the 2 most important questions. If you love somebody, if you care about somebody, please ask them these 2 questions. कि बुक कौन सी पढ़ रहे हो और एक्सरसाइज की नहीं. Because mental fitness and physical fitness, they go hand in hand. Yeah. Love is an anchor. Yeah. Love is ठहराव. Love is also butterflies. So I think if a person understands what you need at a given point in a situation, then that understanding is love. And that's why it doesn't have to be limited to caste, culture, age, height, skin type. Yeah. ये सब कुछ फर्क नहीं पड़ता है. If you love somebody, then make them feel loved. And it's very easy to do. वो ज़्यादा कोई rocket science है ही नहीं. मतलब बहुत simple है. उसको हम ही complicate करते हैं. Hello and welcome to My Girl Bestie, a podcast by Anirez, where we talk to our favorite female creators and have open and friendly conversations. Today's guest is Shweta Tripathi Sharma, who has been on Anirez multiple times, and you have seen her poetry, her acting. Today we'll talk about love, life, movies, friends and everything with her. Today's episode is powered by My Muse, which is India's first bedroom essentials brand. They are making intimacy easy, fun and affordable for Indians everywhere. So you can go onto their website and use the code unerased10 to get a discount and buy their amazing products. It's very funny because my first interaction with you was when I was a small kid and you were not aware of it because I used to watch Kya Mast Hai Life, right? And somehow when I met you again through poetry and all of these things, I could still see that person. I don't know, how old were you when you were on that show? Wow! I must be. So I'm not good with numbers. Okay. But roughly, and that were is you- not because I'm hiding my age. No, Even no. if you ask me how many films I've done, I am number-wise, Sure. I don't know. But I must be, I think, around 24. Okay, so you were not in your teens. Not at all. You were in your 20s. Way past my teens. Wow. Yeah. But I don't know how have you kept this side of you alive, which every time I meet you, get very surprised because I wish I could do that as well. Is there something you do? There are days where you're feeling, I wouldn't say on top of the world, but there are days where you feel very good. Yeah. Where you feel, यार यही तो सपना था. And how lucky are we? Also हम कितना ज़्यादा कंप्लेन भी करते हैं कि अब मतलब हमें मिर्ज़ापुर मिला है, हमें मसान मिला है, हम दुनिया के बिगेस्ट फिल्म फेस्टिवल में गए हैं और वहाँ पे स्टैंडिंग ओवेशन मिला है और हम कितनी जल्दी वो सब भूल जाते हैं. Yeah. क्यों? क्योंकि हमें दुनिया ने बताया है, सोसाइटी ने बताया है, इंडस्ट्री ने बताया है, ऑडियंस ने बताया है कि क्या तुम नहीं हो, कि क्या तुम्हारी कमी है. Right. पर उस चक्कर में मतलब वो सारी सोशल मीडिया जो कोट्स हम पे थ्रो करता है ना, बट आई अग्री विद अ लॉट ऑफ देम. क्योंकि एक बार सांस लेके थाम के ये भी तो देख लेते हैं कि यार शुरुआत कहाँ से हुई थी. एंड आई रिमेंबर जब मिर्ज़ापुर का ट्रेलर अभी 3 का आने वाला था एंड देयर वाज दिस एक्साइटमेंट एंड I was like, यार it's the entire country is waiting for this show. Yeah, it's crazy. ये ट्रेलर आने वाला है, you have a lead part in that and I know that I gave it what I thought was right. अब वो perceive कैसे होगा उसके आगे पहले ऊपर नीचे
वो अब किसी के हाथ में नहीं है. एंड दैट इज़ ऑल्सो समथिंग दैट आई हैव लर्न फ्रॉम माई वर्क कि भाई एक्सपेक्टेशंस अगर रखोगे ना तो उसका एटलीस्ट इन माई जर्नी आई हैव रियलाइज दैट एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट मैं जितना जल्दी करने लगती हूँ उतना वो मेरा भला होता है और इवन पीपल अराउंड मी का भला होता है. क्योंकि जब हम एक्सपेक्ट करते हैं ना तो उसका तो कोई लिड नहीं है, आप कम थोड़ा ना एक्सपेक्ट करते हो. तो उससे अच्छा है कि काम करो और फिर यू कैन जस्ट विश एंड होप एंड प्रे दैट इट विल बी अप्रिशिएटेड. बट अगर आप सिर्फ उस पर डिपेंड करोगे तो वो थोड़ा आई थिंक गड़बड़ हो जाता है. सो दैट इज़ व्हाट आई रिमाइंडेड माई सेल्फ. बट आई वाज लाइक ठीक है जो भी होगा, पर हमने तो अपनी दिल जी जान प्यार मेहनत खून पसीने से बनाया है एंड इतना टाइम लगा है वो बनाने में एंड लिटरली वो हमें कंज्यूम कर लेता है. आई वॉन्ट टू सेलिब्रेट दैट. आई वॉन्ट टू सेलिब्रेट जो मेहनत गई है सबकी, लाइक फ्रॉम अ स्पॉट बॉय टू द मेकअप आर्टिस्ट जो प्रोस्थेटिक्स करते हैं. एंड इट इज़ अ शो अबाउट इमोशंस बिकॉज वायलेंस ऑल्सो वो इमोशंस से ही आता है. एंड इनफैक्ट मिर्ज़ापुर से आई अंडरस्टूड दैट why does nobody is born evil. कोई पैदा वैसा नहीं होता है. आपकी लाइफ में इवेंट्स होते हैं, सिचुएशंस होते हैं, लोग होते हैं जो आपको थोड़ा कड़वा बना देते हैं, थोड़ा नाखुश बना देते हैं. Right. तो जब तक हम फिंगर्स पॉइंट करते रहेंगे कि ये ऐसा है वो वैसा है तो कुछ हेल्प नहीं होगा, कुछ सॉल्व नहीं होगी. जजमेंट पास करना बहुत ईजी है. सो बीइंग एन एक्टर especially with Mirzapur because it's been 9 years. मतलब 9 साल बहुत होते हैं. So this relationship with the characters and especially Golu, it has left a huge mark on me and I'm very happy about that because I love her. I love her so much and I want to मतलब मेरे बारे में कुछ भी कह लो पर गोलू के लिए I'm very protective. So this entire thing, that journey, I want to do things that make my eyes twinkle like the way you said. Yeah, exactly. कि अगर मैं डांस के बारे में बात कर रही हूँ तो आई थिंक लाइफ का वही है दैट आई वांट टू फिल माय डे विद एज मेनी थिंग्स दैट मेक मी माय आईज ट्विंकल. राइट. बिकॉज वो आपके ऊपर है. क्योंकि दुनिया में जो हो रहा है अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे या फिर आप देख लोगे कि मतलब बहुत सारी गलत चीज़ें हो रही हैं. Sure. बट मैंने ये नोटिस किया जब मैं उस पर फोकस करती हूँ ना तो मैं इतनी ड्रेन आउट हो जाती हूँ दैट आई एम ऑफ नो हेल्प टू एनी बडी. अपने तो हेल्प नहीं बट इवन लाइक आई स्टॉप लिसनिंग. आई एम मैं एक अलग दुनिया में चली जाती हूँ. तो द मोर in present you are, I think it's very important to be affected by what's happening around you, but you must have some control because only then will we be able to contribute or make a difference. Food is very important to me. I love घर का खाना. Nice. तो मैंने actually I made a list. Cheetah was watching a football match. Sunday को था. I don't have much interest in football. तो मैं पीछे बैठ के I wrote in my diary what makes a good day for me. Okay. And I was like, I just want to try and follow that. What makes a good day for me when I'm not on set? Because when I'm on set, then I'm the happiest. It's my sacred place. I love, like, just talking about it makes me happy. But when I'm not shooting, what are the things that make me happy? And ये सिर्फ कहने के लिए नहीं, as you know, to sound like oh meditate करना चाहिए. But I know कि जब मैं meditate करती हूँ मेरा मूड अच्छा रहता है. और ऐसा नहीं होगा कि आप सारे चेक कर लोगे सारी चीज़ें तो आपका दिन मैजिकली कुछ और हो जाएगा. दिन वैसे ही होगा बट आपके पास एक बैटरी पैक आ जाएगा टू डील विद इट बेटर. सो नो मैटर व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड, आप यू कैन, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट योर कोर. जैसे कि वॉट एवर इज हैपनिंग अगर आप ही हिलने लगोगे तो फिर तो मतलब एवरीथिंग विल बी ऑल ओवर द प्लेस. सो जस्ट ट्राई टू बी एज काम एंड कंपोज्ड एज पॉसिबल. एंड सो माई डे इंक्लूड्स रीडिंग बुक्स. Oh, nice. I have, in fact, and I keep saying this because this is so important to me. पापा हमेशा 2 सवाल पूछते थे while growing up. One was कि book कौन सी पढ़ रहे हो, and second was exercise की कि नहीं की. And I've realized that these are the 2 most important questions. If you love somebody, if you care about somebody, please ask them these 2 questions. कि book कौन सी पढ़ रहे हो और exercise की कि नहीं. Because mental fitness and physical fitness, they go hand in hand. Yeah, that's true. And जितना पढ़ते हो ना, क्योंकि जब आप अगर किसी ने इतनी मेहनत करके पढ़ाई करके एक किताब में अपनी पूरी नॉलेज इन्फॉर्मेशन इमोशंस डालें तो हम पढ़ लेते हैं ना. हमें तो सिर्फ पढ़ना ही है. और फिर इतनी जो मेहनत की है हमें लिटरली हम बुक्स को पेजेस को फ्लिप करके हम वो सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं. सो व्हाई नॉट डू दैट? So now I have started really, I think post 35 is when I have started working out.
एंड आई रियलाइज दैट हाउ अमेजिंग इट इज. सो अगर आप किसी से प्यार करते हो ना तो मत पूछो कि खाना और थोड़ा और ले लो, मत पूछो. वो जिसको खाना लेना है वो उतना ले लेगा, क्योंकि ज़्यादा के चक्कर में ना वो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी इनकरेज विच आर नॉट हेल्दी, जो हमारी हैबिट्स चलती आ रही हैं. सो रीडिंग बुक्स, मेडिटेटिंग, there's a breathing technique that I do called Wim Hof. 10 मिनट लगता है. Whenever I start my day with it, it really helps. Even a simple thing like brushing at night, because there are days I get lazy. But I know that जब मैं रात को, इतनी छोटी सी चीज़ है, but जब मैं रात को ब्रश नहीं करती हूँ ना, next morning it doesn't start as amazing. तो कर लो. और कितने लगते हैं, मतलब 4 मिनट for your whatever skincare that you want to do. And the thing is, we have to take care, and we don't have to take care just because it's a वो glamour industry या वो सब नहीं भाई. काम में ये भी it matter करता है. And especially my characters go on screen with hardly any makeup. जो मेकअप होता है या वो मच्छर की बाइट्स होते हैं या वो किडनैप लुक होती है, तो उस सब के लिए these are things you have to take care, not because of vanity but because you are going to be on screen. And उतना वो respect होना चाहिए, I feel. Definitely. No, I really like the two questions you told me. I think that's a very good question a father is asking at a young age, right? Yeah. And you told me that you've exercised today. तो आप अभी कौन सी book पढ़ रहे हो, ये बताओ. मैं I've specially got this book दिखाने के लिए. हाँ जी. It's called Scripting Bollywood and it's अनुभा यादव की. वहाँ पे दिखा दो. ये है. Nice. Scripting Bollywood अनुभा यादव की. एंड वॉट इज़ रियली अमेजिंग इज जब मैंने पढ़नी स्टार्ट की, अच्छा बुक्स का भी मुझे लगता है अपना अपना टाइम होता है. ये किताब मैंने पहले भी लाइक मेनी अदर किताब मैं उठाती हूँ और फिर मैं थोड़ा पढ़ती हूँ, फिर मैं रख देती हूँ, फिर मैं कोई और किताब उठाऊँगी और मैं वो पूरी ख़त्म कर दूँगी. तो ये डिपेंड्स. एंड आई रियली थिंक देयर इज अ टाइम व्हेन द बुक्स कम टू यू. एक होता है लाइक दे विल कम विद योर आंसर्स. सो अभी देयर इज there's a very lovely book and it's amazing that I'm forgetting its name. Days at the Morisaki bookshop. Okay. Morisaki. Days at the Morisaki bookshop. इसके 2 parts हैं. It's such a lovely and beautiful book. It is about a bookstore and the people who come in it. तो एक वो किताब मैं पढ़ रही हूँ. एक किताब मैं अभी मेलुआ का मैंने अमीश त्रिपाठी की. आई एम डन विद द फर्स्ट वन. अभी आई एम ऑन द सेकंड वन, नागाज. वो तो इट्स लाइक अ स्क्रीन प्ले. वो मतलब मसाला मैक्स एंड इट्स वंडरफुल बिकॉज यू गेट टू लर्न ऑल्सो सो मच इवन अबाउट वॉर स्ट्रैटेजीज कि क्या होता है, कैसे होता है. तो वो हमेशा आई थिंक एज एन आर्टिस्ट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप फीडिंग योर सेल्फ विद गुड कॉन्टेंट. एंड वो गुड कॉन्टेंट सिर्फ देख के नहीं, वो आप सुन के भी आ सकता है पॉडकास्ट या फिर पढ़ के भी आ सकता है. तो आई थिंक पढ़ने में मज़ा क्या आता है कि आपका इमेजिनेशन रन्स इन विच एवर डायरेक्शन द राइटर वांट्स इट टू. So that is something that I enjoy about it. Scripting Bollywood is one, and there's another one which I'm really enjoying, which is 21 lessons for the 21st century. Nice. तो वो भी सही है बिकॉज मुझे वही लगता है कि आजकल दुनिया में जो हो रहा है देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो हमें ऐसे हिला के रख देती हैं और कई बार समझ में नहीं आता यार कि व्हाट आर वी सपोज टू डू, क्योंकि हमारी ज़िंदगी भी चलती ही जा रही है बट यू वांट टू कंट्रीब्यूट. So that book has a lot of wonderful ideas and things. So in case you're wondering how you can save the world, then I would say please 21 Lessons for the 21st Century is a book that we should pick up. It's a lovely recommendation. I really like what you said that books come to you at a certain time because I realized this very recently. There was a book, I don't remember the name. It was a young adult fiction. I think we John Green की book थी, है ना, जो teenage में पढ़ते थे. वो मैंने 16 साल में पढ़ी होगी और ठीक है अच्छी लगी. मैं 2 साल पहले पता नहीं आई थिंक पैंडेमिक में आई वाज रीविजिटिंग माय ओल्ड बुक्स एंड आई स्टार्टेड रीडिंग दैट बुक एंड आई रियलाइज्ड it is so much more relevant to my life right now, you know, and I took so much from that. And I feel like books are such strong pieces of art because there is no visual, but a good book can make you imagine a whole world, right? Which, I mean, as a writer, you always wish you can do that. Do you also write? I don't, and that is something that okay, so poetry. Yeah. तो पहले तो why I love being an actor is because all these things the characters leave us with. शालू जो मसान से है
शालू को पोइट्री पसंद थी Hmm. एंड थैंक्स टू शालू पोइट्री केम इनटू माय लाइफ. उससे पहले आई डोंट हैव एनी कॉन्शियस मेमोरी कि मैं किताबों के साथ अगेन बचपन में आई यूज्ड टू रीड एनिट ब्लाइटन. I used to love it. Then of course there was Harry Potter, then there was Da Vinci Code. I love that. तो वो किताबें, but it was very on and off. Yeah. I really wish I had read more books, especially poetry, because I think it changes you. I think poetry has a lot of emotion of saying things beautifully, and somehow you understand what the writer or the characters or a feeling is, Yeah. or what they're going through, or what they want to take you through. I think that's the magic of poetry. तो जब शालू ने पोइट्री स्टार्ट की तो इनफैक्ट जब जो शालू दीपक से पूछती है ना कि अकबर इलाहाबादी, बशीर बद्र, नाम तो सुना होगा आपने, तो आई वॉज दीपक. I got it. Like when you were reading the script, you were yes, like, yes, I didn't know of their existence. और मुझे लगा था कि अच्छा ठीक है, मतलब मैंने तो बोला क्योंकि डायलॉग था. फिर बाद में थैंकफुली जब पोइट्री शालू की द वे जो जिस तरह से जो रेसिटेशन था, जिस तरह से बोला, कुछ कनेक्ट हुआ ऑडियंस को. एंड बिकॉज ऑफ दैट, in fact a lot of interviews में then they used to ask me कि poetry you know बोलो. अब now कौन interview में, तब I should have or maybe I don't know, but I said of course कि मुझे poetry बहुत पसंद है. मतलब ये तो अच्छे नंबर आपको मिल रहे हैं ना बोलने के लिए कि आपको poetry पसंद है. कौन बोलेगा कि नहीं 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 मुझे नहीं है. तो I said हाँ. और फिर जब वो बोलते थे कि कुछ सुनाइए, and I was like oh my god, ये तो मुझे प्रिपेयर होके आना चाहिए था. तो मैं मसान की मतलब तू किसी रेल से गुजरती. और चीता used to laugh so much like Shraddha what is this. My mom has messaged me कि बेटा थोड़ा तो मतलब एक दो कुछ शेर सीख लो. हाँ प्लीज थोड़ा सीख के कर दो. एंड विच आई नो आई शुड बी डूइंग बिकॉज नॉट टू प्रूव इट टू द वर्ल्ड, बट ये तो अच्छी चीज़ है तो वो करनी चाहिए. हैव आई डन इट? नो नो. And I am guilty of that. Is that something I would want to do? 100%. But like the many things that we should do and we want to do and we don't end up doing, this joins that list. And thanks to Masan and poetry, you got in touch. Yeah. और आपने, and this is something that I appreciate so much, that without being pushy, without poking too much, you gave me my space. You told me कि ये करते हैं. अब नाउ बिकॉज मेरा तब इतना इंटरेस्ट नहीं था एंड आई वाज वंडरिंग कि नहीं यार मतलब ये तो क्या होगा, कैसे होगा, मैं तो लिखती नहीं हूँ. इट जस्ट हैपेंड एंड थैंकफुली, एंड दैट इज समथिंग दैट आई लर्न फ्रॉम दैट, इज कि व्हेन यू टॉक अबाउट समथिंग दैट यू रियली कनेक्ट विथ, दैट यू फील, it will reach people. And people will feel what you want them to feel. And I think that is what happened with Tum Ladki Ho. Because it's not what you go through, but also the women and girls and aunties and buas and masis and chachis, what they are going through. बिल्कुल. And poetry से आप वो कर सकते हो. And I can't thank you enough, Simar, because when I go to, I remember पटना में जब मैं गई थी या मैं दिल्ली में भी थी, there was this boy जो मेरा बाल को blow dry कर रहा था because I was going for a wedding, and he said that कि मैम आपकी ना मुझे dialogues बहुत अच्छे लगे. तो लाइक मेरी डायलॉग्स मेरी डायलॉग तो काफ़ी ऐसे खतरनाक टाइप के, आप ही का मन था ना कि आपकी बेटी मिर्ज़ापुर पे राज करे. बट आई वाज लाइक मेरे डायलॉग अच्छा हो क्या. आई वाज थिंकिंग कौन सा, एंड देन ही सेड पोइट्री, एंड आई वाज लाइक इट मेड माई हार्ट सो हैप्पी दैट एवरीबडी एक कनेक्शन हो पा रहा है जो कि आई वुड हैव नेवर इमेजिन्ड. एंड देयर आर सो मैनी पीपल हु keep going back to it. And they tell me ki jab they are in a low phase or a not so good phase, and I'm hoping happy phases too. Actually, we should do a happy phase ka poetry also. We were discussing about that once, remember? Yeah. Ki it feels that you're not alone. Yeah. And I think that is very, very, very important, because us as a species also, we are social animals. And that is one of our USPs. कि हम जब साथ में मिलके काम करते हैं तो सबका भला होता है. तो I think poetry वो करता है. लिखना is something I want to do. It's just that I think in my mind and even on paper, it's a very nursery type of
rhyming and things that I do, but I think that's okay. Yeah, sure. हाँ मतलब वो as long as it makes some sense. And it's But for you. It's not for it's anybody me. else. Yeah. And I want to improve. And ठीक है मतलब पहले जो भी होगा, and if I have people around me to Yeah. guide me and to help me, तो ठीक है. And हर चीज़ वो आप वायरल कंटेंट के लिए नहीं करनी चाहिए. नहीं बिल्कुल नहीं. वो in fact I just did a pole dancing class. And after that, and it was a great video. Like, you know, I was impressed and I sent it to my friends and everybody was like, wow, ये first class है. And I wanted to put it up, but then I was like, no, this I'm doing for myself. Yeah. हर चीज़ सोशल मीडिया के लिए नहीं है, हर चीज़ दिखावे के लिए नहीं है, क्योंकि जब वो वैसा हो जाता है ना, तो कहीं ना कहीं आप उसका वो इंटेंट थोड़ा, there's nothing wrong with that. Yeah. But I don't know, for me, I feel वो थोड़ा मिलावटी जब होता है तो उसका प्योरिटी चली जाती Yeah, है. yeah. I think the authenticity is what makes it really good. I really like how it was so random that we ended up doing these few poems together, and you've also been a great sport, very open, very you know, क्या हो जाता है when you're working with someone, sometimes people are not that, they're slightly closed off or reserved. You've always had your ears open, and you've also had a lot of your own ideas, which just makes it very fun. It's crazy how now you're sort of like a face for poetry when people watch poetry in Hindi, right? And especially that poem, wo dard kab khatam hota hai. I still have so many people like tagging us all the time. I'm like, Yeah. I love this. It's great. Yeah. And I'm glad that it makes something like poetry a part of your life, which otherwise would not have been if not for Masan, if not for these few things. True, absolutely. And I think that's also like even Golu likes to read a lot. Yeah. तो वही मुझे लगता है कि मेरे थैंकफुली किरदार जो हैं they seem smart and but also I think that is because I like to play women who behave well under difficult circumstances. Yeah. वो मुझे पसंद है. एंड अगेन मैं कह रही हूँ ना कि मुझे लगता है मैंने लाइफ में अगर थोड़ा भी जितना भी अचीव किया है, जब मैं ये किताब पढ़ी हूँ, देयर आर सो मेनी विमेन जिनके अगेन गिल्टी, मैंने द नेम डजंट रिंग अ बेल, Right. जो 18 साल में इंडिपेंडेंस के टाइम पे आके दे आर प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, राइटर्स एंड दे आर मेकिंग देयर ओन फिल्म्स एट 18. Wow. तो वही वो लगता है यार कि मतलब जो भी कर रहे हो वो अप्रिशिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है. बट अगेन देयर इज़ अ लॉट दैट इज़ गोइंग ऑन. तो एक लाइफ है, वो बिल्कुल. उस एक लाइफ में जो खुद करना चाहते हो ना, हाँ. वो कर लो. आपने अपने रोल्स की बात की. आप ऐसे कौन से रोल्स हैं जो आप देखते हो या आपने देखे हैं फिल्म्स में दैट कैरेक्टर्स हैव स्टेड बैक विद यू? अच्छा, नॉट माई रोल्स, द अदर रोल्स. Yeah, ओके. when you watch as a viewer or as an actor. I remember growing up, I was highly influenced by Sridevi. Okay. I used to love her. And अभी भी मतलब वो चालबाज का जो गाना है, ना जाने कहाँ से आई है, मतलब her comic timing, the way she was, I don't think there's anybody like her. Like, it seemed like she is enjoying, she is having fun, and she doesn't care about what others are thinking. She was just so beautiful being herself. That is something that really excited me. Like, you know, चाहे वो रूप की रानी चोरों का चोरों का राजा हो, या फिर इवन सीता गीता. आई थिंक आई लाइक्ड वुमेन जो थोड़ी ना, जिनमें थोड़ी मस्ती थी. लाइक उनका हेमा मालिनी का भी मुझे याद है, वो पंखे पे चढ़ी हुई हैं. हाँ. या फिर इवन इन सीता और गीता, वो एक वो धागा लटका होता है, बिकॉज वन ऑफ देम वो मतलब सर्कस करती हैं. सो ऐसी वाली चीज़ें दे स्टेड मोर विद मी. लाइक वेयर जहाँ पे ज़्यादा वीरा एनर्जी थी, जहाँ पे थोड़ा रेबेल था, Right. जहाँ पे बहुत सारी मस्ती थी, बट नॉट रेबल विदाउट अ कॉज, Sure. कि कहीं ना कहीं वो एक ठहराव भी था. So those are the films that I really like. Then also Titanic, actually, Kate Winslet, when I saw her, beautiful. Yeah. I think kahin na kahin, maybe now that I'm thinking about it, that when you love somebody, you love the person, not the background, not the education, जो qualification है आपका, आपके मम्मी पापा कौन है. I think and वो शालू में भी दिखता है, जो मसान में है, एंड विच इज़ माई अपब्रिंगिंग एज वेल. हमेशा बचपन में ये था कि लड़का पढ़ा लिखा होना चाहिए. दैट वॉज इट. नथिंग एल्स मैटर्ड. एज में, आई मीन, चीता इज़ 5 years younger. सो माई पेरेंट्स नेवर मेड अस बिलीव दैट ये सारे रिक्वायरमेंट्स हैं जो होने चाहिए. देन इवन लाइक टूम रेडर,
और इवन अभी क्वींस गैम्बिट, these shows, Handmaid's Tale. So I really enjoy that kind of drama. So, and I think that has had a huge influence on me because what we see does have an impact. इसलिए आई थिंक इट्स सो इम्पोर्टेंट कि प्लीज गार्बेज मत देखो, Yeah. क्योंकि वो You don't हमें लगता है realize, हाँ. वी डोंट रियलाइज, पर वो ना माइंडलेस स्क्रोलिंग में कहीं ना कहीं आपका बॉडी, आप सुन रहे हो, आप देख रहे हो, आपका दिमाग को कंज्यूम कर रहा है. बिल्कुल. सो लेट्स बी लिटिल मोर माइंडफुल अबाउट दैट. मेरिल स्ट्रीप, आई मीन वो तो, Of course. Yeah. बट लाइक एमा वॉटसन Yeah. और इवन एमा स्टोन, आई लव हर. Yeah. कि मतलब शी इज हरसेल्फ जेनिफर लॉरेंस. तो ये सब Yeah. बहुत मजा आता है जब व्हेन एन हैथवे, जब इनको देखते हो, देयर इज अ सर्टेन पावर Yeah. to these actors that I really enjoy. It's very cool. I love Ratna Pathak Shah. Of course. मतलब even again साराभाई versus साराभाई Yeah. में मतलब my god fantastic, even other काम में. But that's such a cool character. Yeah. तो वही वो गुड बैड की बात नहीं है. आई लाइक एक्टर्स एंड कैरेक्टर्स जो वो ब्लैक एंड वाइट एंड ग्रे के बाहर होते थे. Yeah. क्योंकि आई थिंक हम ब्लैक एंड वाइट एंड ग्रे नहीं, हम सब में इतना कलर होता है. हमें सैचुरेटेड भी है, पेस्टल्स भी हैं. तो कैरेक्टर्स दैट एक्सप्लोर दैट, मतलब वही होता है ना कि अगर वैम्प हो तो आप सिर्फ वैम्प हो, या फिर आप मतलब कॉमेडियन हो तो फिर आप सिर्फ वही कॉमेडी कर रहे हो और वो म्यूजिक बज रही है पीछे. एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट, बट आई एंजॉयड ऑल दिस मोर. I saw that spark in your eyes again when you were talking about all the actors. That's a good sign for me. I want you to tell me, because you spoke about how your prerequisite for love was never all these external things, but how the person is. So I want to understand the role that love has played. आपके life में प्यार का क्या role रहा है अब तक? मेरे हिसाब से the most important thing is how you make the other person feel. आप उनको उनके बारे में, अपने बारे में, सिचुएशन के बारे में कैसा फील कराते हो. इनफैक्ट अभी जस्ट इन दिल्ली कुछ काम से रिलेटेड बात हो रही थी, एंड आई वाज रियली गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज आई वांटेड टू डू समथिंग creatively exciting. And I was being told that numbers and dates and ये कितना important है. And I'm like, यार तुम्हें मतलब product से like let's not do this as a job ना, please. It's not about कि अच्छा इस डेट पे ये डिलीवरेबल हो गया तो काम खत्म. I don't want to do that. Yeah. I want to have fun while I make something where I put something, and I want my audience matters to me a lot. Because I care for them, because they really care for me. तो this is my way to show my love to them. तो इसलिए मुझे वो एफर्ट डालना है उस चीज़ में. तो लव मुझे वही लगता है कि आप एफर्ट कहाँ डालते हो, क्या डालते हो. तो आई वॉज रियली गेटिंग फ्लस्टर्ड एंड आई वॉज इरिटेबल, एंड सो चीता आस्क्ड मी कि क्या हो गया. एंड आई वाज लाइक यू डोंट अंडरस्टैंड, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, आई हैव टू गो थ्रू दिस. एंड 2-3 चीज़ें सारी एक साथ हो रही थी. एंड देन ही सेड ओके, डू यू वांट मी टू टेल यू स्टफ राइट नाउ और नो. एंड आई वाज लाइक वाह, व्हाटएवर, से. And then जब उसने बोला, and he said do it, and he just showed me the other side, and I realized that is so important to see the other side. क्योंकि वही इमोशंस में जब हम बह जाते हैं ना, तो फिर हम वो रीजनिंग लॉजिक वॉजिक छोड़ देते हैं. जो हमारे लिए शायद चीज़ अच्छी भी होती है, हम वो भी उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हैं. सो इट्स, I think love does that. Yeah. Love is an anchor. Yeah. Love is ठहराव. Love is also butterflies. So I think if a person understands what you need at a given point in a situation, then that understanding is love. And that's why it doesn't have to be limited to caste, culture, age, height, skin type. Yeah. ये सब कुछ फर्क नहीं पड़ता है. If you love somebody, then make them feel loved. And it's very easy to do. वो ज़्यादा कोई rocket science है ही नहीं. मतलब बहुत simple है. उसको हम ही complicate करते हैं. आप आप बहुत मेरे लिए बहुत अलग स्टेज में हो लाइफ में इन रिगार्ड्स टू लव, बिकॉज यू आर मैरिड एंड आई एम फिगरिंग आउट what I like, who I like, in a very different stage. And I have, whenever I meet my married friends, I always want to understand, how do you navigate love after marriage? Because I've always heard that something changes. Or it doesn't change for you. I don't know. What happened for you?
सी हमारा थोड़ा अलग भी है बिकॉज वी बोथ आर एक्टर्स. चीता इज ऑल्सो म्यूजिशियन. सो हमारे जब हमारे पास टाइम नहीं होता है ना तो बिल्कुल टाइम नहीं होता है. राइट. तो इसलिए फिर जब टाइम जो मिलता है ना तो आई वुड से हमारा हनीमून फेज इज स्टिल गोइंग ऑन ओके. बिकॉज वी चेरिश आवर टाइम टुगेदर. And he is my best friend. He is my favorite person. चाहे alone on an island हो या फिर like if there is anything that I could do or it might be cooking together, whatever it is, I would want to do it with him. That doesn't mean that हम दो जिसमें एक आत्मा है. I think वो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है. Space is very important. No matter who you love, like be it Malika Dua, be it my mother, my sister-in-law, or any person that I love fully, unconditionally, फिर भी space बहुत ज़रूरी है. बिल्कुल. क्योंकि it's important to process your own thoughts. Yeah. क्योंकि कई बार and it's unfair to the other person if you just वो space नहीं होती ना तो आप चिड़चिड़े से हो जाते हो. तो that doesn't help anybody. So in a marriage, space is very important. Respecting each other's dreams. And they do not have to be aligned. Yeah. बहुत अलग हो सकती हैं. किसी को एक चीज़ पसंद है मतलब खाने का भी वैसे ही होता है. नाउ आई एम वेजिटेरियन एंड चीता इज नॉन वेजिटेरियन. तो हाँ तो मतलब पहले लगा था अरे कैसे होगा बट हो जाती हैं चीज़ें जो आप अपने दिमाग में बिग डील बना देते हो ना तो वो बिग डील हो जाएगी. सो आई थिंक इट्स पूरा नज़रिए की बात है. वो अगर आप फिल्टर चेंज कर दो तो वो पूरी चीज़ ही इफेक्ट ही पूरा चेंज हो जाता है. I think so having that, even it might be a simple thing of having different friend circles. Because you might enjoy somebody's company and your partner might enjoy somebody else's company. And that's okay. Make your own rules. Yeah. Actually, more than rules, have your own guidebook. Yeah. And just because कोई ये कर रहा है आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है. आपको हर जगह साथ में जाने की ज़रूरत नहीं है. तो I think the more vocal we are, I wasn't at all. मैं अपने हमेशा चीज़ें अपने पास रखती थी, अपने दिमाग में रखती थी. Cheetah is the one who used to force me. He used to sit me down and he said, I still remember, he said, I am not going anywhere till the time you tell me what is bothering you. So पहले I was like, अरे no, it's nothing. But वो it's nothing करके कुछ वो nothing ही फ़ायदा nothing ही होता है. And he forced me to talk. So now जब भी हमारी लड़ाई भी होती है ना किसी भी stupid चीज़ पे, we talk about it. And he knows that it's difficult for me to start that conversation. So no matter बेचारा उसका कितना भी मूड खराब होगा या फिर अगर गलती मेरी भी होगी, he is the one who starts the conversation. Because हमारे सर दर्द हो जाता है. Because क्यों लड़ाई करके क्या ही होगा वो मतलब it's toxic. आप overthink करते हो, घुटते रहते हो, फिर वो again it multiplies. It doesn't help anybody. Yeah. And it's also like quicksand. आप सैड या एंग मेरे हिसाब से इन इमोशंस को अगर ज़्यादा वो देते हो ना तो दे कीप रीलिंग यू इन. इट्स नॉट लाइक हैप्पीनेस. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप अ चेक ऑन योर सेल्फ. एंड ऑल्सो वन थिंग दैट रियली हेल्प्स मी इज नो मैटर अगर आपकी सिचुएशन भी जो हो रही है अगर लड़ाई भी हो गई है जस्ट पुल योर सेल्फ आउट. That, yeah, and most people don't do that. Yeah, and want to express the anger in the moment. Yeah, and anger भी वही है ना थोड़ा पोक करते हो तो आपको लगता है then you will say things that you don't want to say that you don't mean. And you're hurting the other person. And एक बार वो निकल जाता है चाहे जो भी ड्रामा वे में जैसे भी it stays. Yeah. Let's not do that. It's very good advice to just remove yourself from the situation. Yeah, and again मैं ये बोल रही हूँ इसका ये मतलब नहीं हर बार मैं भी प्रैक्टिस कर पाती हूँ बट आई कीप रिमाइंडिंग माई सेल्फ कि बिकॉज फिर आप ईगो हटा देते हो. आप ये नहीं सोचते कि मुझे कैसे बोल दिया या फिर ये वैसा नहीं. इफ़ यू जस्ट पुल योर सेल्फ आउट कि ओके इफ़ यू हैड टू गिव एडवाइस टू योर सेल्फ इफ यू हैव टू बी ऑन बेस्ट फ्रेंड. जब हम बेस्ट फ्रेंड की बात सुनते हैं तो हम इमोशनली उतना वी फील फॉर our best friend and for the situation that happened, but we are able to give a better perspective. बिल्कुल. तो आई थिंक वो अगर अपने आप को बाहर से देख के तो खुद भी आ जाता है यार. एंड मुश्किल है फिर भी सॉरी बोलना बट देन एक बार वो बोल देते हो ना you just feel lighter. You feel कि चलो ठीक है अच्छा हुआ. ये हार्डली होगा कि बात करके आपको लगेगा अरे यार मैंने बात भी क्यों की. वो इट्स ऑलवेज बात करके अच्छा होता है. I completely agree with that. I was actually talking to someone about this कि how शुरू में जब मैं रिलेशनशिप्स में था एज अ गाय आई डिडंट नो हाउ टू डील विद कॉन्फ्लिक्ट. तो मेरी जब लड़ाई होती थी मेरे को लगा चलो ब्रेकअप होने वाला है अभी मतलब देयर इज नो वे हाउ दिस विल गेट ओके. एंड देन आई रियलाइज दैट दिस काइंड ऑफ कम्युनिकेशन रिमूविंग योरसेल्फ फ्रॉम द सिचुएशन इट जस्ट हेल्प्स सो मच like two people coming together because I feel more than
the happy moments, you get closer when you go through those tough times, because it shows that you can navigate together through this. So that's really good advice, actually. And I think it's also important to know that you're on the same team. Yeah, exactly. तो वो person नहीं करना चाहेगा. Yeah. आपका ये अभी बस conflict हुआ है, and it really helps because you understand. And there was this one incident. I was really worked up about something, and I called up my friend, and I was upset with him. And he just heard me out. Yeah. And not heard me out कि अच्छा ठीक है इसको बोलने देते हैं फिर हम बोलेंगे. हाँ. No, he tried to understand कि अच्छा इसको ये लगा तो क्यों लगा. बिल्कुल. Rather than fighting with me. बिल्कुल. He was like अच्छा ओ तुम्हें ऐसा लगा. हाँ. अच्छा okay. And that will always stay with me. Yeah. That he did not try to justify. He did not try to clarify. He just tried to understand that what I felt, why did I feel that? Yeah. That's really nice. On that note, we're going to move to a section of the show I really enjoyed it, is Feel the Vibes with My Muse. Okay. Where we're going to talk about things that I feel generally बात करनी चाहिए, हम openly करते नहीं है. और ये हमारी जब फ़ोन पे बात हुई थी आपने बताया था कि कैसे मिर्ज़ापुर में your character is so layered. There's so many things happening. But there was this one scene which was intimate nature, and somebody picked it up and they sensationalized it. And you told me how that experience was. So I want to know, as a female actor in this industry, why do you think we end up still picking why is it still a taboo when what happens in real life is being shown on screen, but we just sensationalize it कि oh my god ये क्या है? हम घरों में ही we are not comfortable talking about it. जबकि it's happening. मतलब you, I, everybody is here for a reason. Yeah. It's an act that everybody does. Yeah. Or they do not do by choice, whatever. But ये होता है. अब वो जो होती है चीज़ उसको जितना हम छुपाने की कोशिश करते हैं ना, जितना दबाने की कोशिश करते हैं, फिर वो गलत बन जाती है. आई एम नॉट सेइंग वी शुड गो ओपनली टॉकिंग अबाउट विदाउट रिस्पेक्टिंग ईच अदर्स इमोशंस, पोजिशंस, थॉट्स, एंड आप जो मनाए मैं वो बोल दो, बट इतना भी किसी को रिस्ट्रिक्ट मत करो कि फिर वो टैबू बन जाए. बिल्कुल. ऑन स्क्रीन द थिंग इज दैट नाउ people have abused that power. Yeah. People have used intimate scenes for different reasons. There are item songs, which are definitely for the music, but definitely for other reasons as well. Yeah. And again, यहाँ पे हम सही गलत की बात नहीं कर रहे हैं. But as an actor, if I'm doing a scene and if I'm being true to a scene and where it is about the emotion, but I know कि it be perceived in a very different way, तो as an actor, what am I supposed to do? क्योंकि है तो face मेरा ही. Yeah. And it's not just about me, it is about my family. It is, I know other female actors who've done intimate scenes, who've done nude scenes. And where it's not been easy. Because हम समाज में रहते हैं. Yeah. And सबकी conditioning की वजह से सब नहीं है इतना evolved. So then again, how do you deal with something like this? Yeah. My thing is that actually most of my work has an adult on it. Okay, be it Masan, be it Mirzapur, be it, I think ye Kali Kali Aankhein, I'm not sure. But most of my work is adult. I did not choose that. Yeah. It just happened like that because I think I like doing drama on screen. अब अगर आप वो कहानियाँ बता रहे हो तो you have to be true in every aspect. ऐसा नहीं होगा कि हाँ सिर्फ हम इस डिपार्टमेंट में सच्चाई दिखाएंगे और इसमें नहीं दिखाएंगे. मसान फॉर एग्जाम्पल, इट टॉक्स अबाउट देवी, विच रिचा प्लेड सो ब्यूटिफुली, एंड वी सॉ अ वुमन टॉकिंग, सीकिंग अबाउट सेल्फ प्लेजर. बट द थिंग इज कि वुमेन का प्लेजर ही हम बात नहीं करते हैं, तो ये हाँ सेल्फ प्लेजर तो मतलब बहुत ही दूर की बात होगी ना. ये तो अभी राइट फ्रॉम कपड़े क्या पहनने चाहिए, मेकअप कैसा होना चाहिए, बैठना कैसा चाहिए, ये सब हमें बताया जाता है कि क्या कैसा होना चाहिए. सो समथिंग वेयर which is on our terms, or when we are asking for things or we are being vocal about what makes us happy, that is not appreciated. It is changing. Thankfully वो हो रहा है चेंज, किताबों में भी हो रहा है, ऑन स्क्रीन भी हो रहा है, बट ये सडनली मैजिक ऑन स्क्रीन नहीं हो जाएगा. These are conversations that we need to have at home. बिल्कुल. And to make people understand कि इसमें कुछ
गंदा या गलत नहीं है, वो अगेन नजरिए की बात है. So I think it's high time we think not just about ourselves but also people around us. Yeah. And वो pleasure सिर्फ फिजिकल भी होता है, मेंटल भी होता है. सो आई थिंक अगर वो एक सेफ एनवायरनमेंट हो जाए ना फॉर सो मेनी थिंग्स, इल जस्ट मेक things easier. We will really grow, improve as a society, as a unit together. I would love to do a solo travel trip. Yeah. Lekin, will I do it? I would like to say yes. Yeah. But am I confident? Do I feel safe enough to travel alone? No. और पहले पता है जब बचपन में ना आप ज़्यादा निडर होते हो क्योंकि इतना सब कुछ पता नहीं होता है. So I had done a trip for 3 weeks where I was alone and it was amazing. It was not in the country. वो बाहर था. But वही है, मुझे अपने I want to travel in my own country without the fear of, मतलब जानवर तो छोड़ो, again वो इंसानों से डर लगता है. बिल्कुल. वो अच्छी बात नहीं है. हम अपने मतलब जो बच्चे हैं उनको हम यही बता रहे हैं कि बेटा ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए. That I feel is a little sad. Yeah, it's always like, okay, you should do this so this doesn't happen to you, but it's never like, oh, you should not be doing this to cause harm to people. Yeah. I agree with that. And I think what you spoke about, how I feel films are a reflection of society, कि वो फिल्मों में जो बातें हो ही नहीं पा रही क्योंकि वो हम घरों में भी नहीं कर पा रहे हैं. So what has been your experience as a kid? We've all had very different experiences with sex education in India. What has been your experience from growing up in whatever family or schooling that you had? And how did you realize about sex education? Sex education, I think growing up तो जो भी पता चलता था was through screen. Okay. Or books. And school में I remember and this is so sad, periods के बारे में जब सबको बताया जा रहा था तो pads बटे थे. And of course when they left then there were pads just flying everywhere, which is just a waste of time, effort, money, everything. तो I think कि टिक मार्क करने के लिए ना कोई चीज़ नहीं करनी चाहिए. अगर आप कुछ भी कर रहे हो, अगर आपको यू एक्चुअली वांट टू एजुकेट, देन मेक इट इन सच अ वे, डू इट इन सच अ वे विच इज़ एंगेजिंग फॉर द ऑडियंस, विच इन दिस केस आर स्कूल स्टूडेंट्स. मतलब वो अगेन हम इतना हॉ कर देते हैं ना कि आई रिमेंबर आई थिंक 8th स्टैंडर्ड में जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पता चलता है, सो यू नो वो क्लास में वो था कि ओ माय गॉड इसके बारे में पढ़ाई होगी. अगेन बिकॉज नोबडी टॉक्स अबाउट सेक्स, नोबडी टॉक्स अबाउट मेन पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स. हम बोलते भी नहीं हैं, तो हम बोलते ही नहीं हैं अगर, तो फिर कैसे होगा. सो अगेन आई एम सेइंग इट विद रिस्पेक्ट. ये नहीं कि कुछ भी आप कहीं भी बोल रहे हो, बट लेट्स बी माइंडफुल अबाउट दीज थिंग्स, क्योंकि जितना हम वो ये करेंगे उतना ही हम लोगों को बता रहे हैं, बच्चों को बता रहे हैं, पीपल अराउंड अस को बता रहे हैं कि ये बात नहीं करनी चाहिए. तो ग्रोइंग अप आई थिंक सेक्स एजुकेशन तो वाज हार्डली देयर, एंड इट वाज वही तुक्के से या बातचीत करके जो भी पता चलता था. इनफैक्ट वन ऑफ द थिंग्स आई थिंक इन द 5th स्टैंडर्ड ये था कि if a boy and girl, ये स्कूल में हमारे पता चला था, and this came as a you know what, कि if a boy and girl they go behind a bush then बच्चा हो जाता है. Oh my God. And at that I think I was in the 5th standard. I did not understand what it meant, and we actually took it at face value. कि if a boy and girl go behind a bush, then there is a child that will be expected. So that was the and then it's much later जब हमें पता चला कि ओह अच्छा bush has nothing to do with it. कुछ करना होता है. You know why I love today is because I have gotten to hear 3 versions of this story. The first episode Priya was here, she told the first time she kissed a guy, she thought she'll get pregnant. Vanika said the first time she hugged someone, she thought she'll get pregnant. Oh my God. And now you have given another variation कि bush के पीछे जाओ तो बच्चा हो सकता है. Yeah. Which is just so sad. And I hope it is changing now. Like when I see my younger cousins, maybe because of social media, I'm hoping there's more positive this, where they are just slightly more aware, more sure, more confident, you know.
बट यू नो सिर्फ गर्ल्स का नहीं, आई फील इवन बॉयज का, बिल्कुल. द होल थिंग ऑफ बीइंग अ वर्जिन और नॉट Yeah. इतनी बिग डील नहीं है. एंड द थिंग इज, वो हम जिस चीज़ों के बारे में मजाक भी करते हैं ना, वो कहीं ना कहीं लोगों को चुभ भी सकती है. सो इफ यू कीप मेकिंग दिस अ बिग डील दैट ओ माई गॉड व्हेन डिड यू लूज योर वर्जिनिटी, क्योंकि ये भी होता था कि यू नो एट व्हाट एज, it does not matter, because then you are asking and telling people that it should be done at an early age. Yeah. But it has nothing to do with the age. Yeah. It has to do with the person. Exactly. हम ये एलिमिनेट कर देते हैं. हम कि मतलब भाई वो इंसान कौन है. आप जल्दी के चक्कर में टू लूज योर वर्जिनिटी, इफ यू आर स्लीपिंग विद द राइट रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल, that is worse. Yeah. Like you're saying that, you know, you have to explore not just your physical self, but how a person makes you feel. That is more important. You have to feel safe. Yeah. Or fun or whatever you want to feel. बिल्कुल. But it's not a race का thing to be, you know, कि अच्छा ये हमने कर लिया. बिल्कुल. वो कोई रेस नहीं है. Please take your own time, because I think sex is not just a thing that you do physically. Yeah. It should be emotional. It Yeah, should be, you 100%. should have a wonderful time. So please enjoy it. Yeah. Whenever you do it, however you do it, with whom you do it, please enjoy it. And whatever that enjoyment का सबका different हो सकता है definition, but आप अपने हिसाब से तो कर लो. And respect, of course, is very important. And I really wish I was told this when I was younger, what you've said, that emotional intimacy, because we don't talk about it a lot. We even in our generation will talk about, okay, physical intimacy, when you lose your virginity, who are you with, and all of that. But the main impact all of these things happen that they have are in your head, how it makes you feel. And end of the day, I think it's about that, the emotional intimacy, the connection you have with someone, how they make you feel, how much they understand you, how much you like things, they like things, that communication. And somewhere, because हम वो basic ही बात नहीं कर पा रहे हैं, ये तो बहुत ही पीछे रह गया है, you know. And even safe sex. Yeah. It is not just कि भाई शादी से पहले या शादी के बाद नहीं. It will result in something. Yeah. And then if you do not want that, then it's just a roller coaster of emotions and things you don't want and expensive. बिल्कुल. And मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं. यही तो इसलिए वो सेफ सेक्स के बारे में भी बात करना बहुत ज़रूरी है. कि भाई this will really equals to a baby. Yeah. So which is a responsibility, and you owe it to the child as well. Yeah. आपकी तो लाइफ चेंज होगी, बट आपकी वजह से, आपके एक्शंस की वजह से ये जो बच्चा है इसकी तो पूरी लाइफ विल बी डिफाइंड लाइक दैट. बिल्कुल. सो प्लीज बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट एज वेल, विच इज वाई इट्स नॉट जस्ट फन. So we should be careful about it. Definitely. I want to start talking about male friendships again, because we spoke about that the other day. Have you had a lot of male friends? Do you have a lot of male friends right now? I've always had amazing male friends, and I still have. There are a lot of my co-actors, my directors, my writers, and boys from other fields of life who I'm very close to, who I love, who I respect, who I'm so fond of. And maybe that has to do with their gender, and maybe it doesn't. Yeah, sure. I've really always enjoyed their company, and it was never about their gender defining anything. It was how they made me feel. Yeah. And I have in fact taken trips with my best friend Veer, and it was just him and I. And वो जो line है कि क्या लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं बन सकते या हो सकते, I'm like, I don't believe in that, because I have a lot of guy friends. और हम दोस्त ही हैं, full stop. Yeah. ना उनको कुछ चाहिए ना मुझे कुछ चाहिए. We are very happy. Some are dating, some are married, some are divorced, whatever it might be. But we know कि मतलब ऐसा हमें और कुछ नहीं चाहिए जो कि दोस्ती से ज़्यादा है. And there are relationships that you cannot define. And I think that's amazing. हमें हर चीज़ पर टैग लगाने की क्या ज़रूरत है? Because I have मतलब I love my guy friends. They are wonderful, and they give me a perspective for my career, for my daily life,
for a film that I want to watch, books I want to read. Matlab, there's a different relationship. And I think relationships need to be celebrated. And even if I want to take a trip with any of my guy friends, I will not do it because I know it'll just complicate so many things. There are so many questions that will be asked, and I really wish that was not the case. And I really wish I get to do a trip like that. जहाँ पे किसी को issue तो होगा ही, कोई बोलेगा कि अगर अगर इंसान को भी ना हो, मतलब आपके पार्टनर को भी ना हो, there will be people कि अच्छा, are you okay with that? Bro यार, how do you deal with that? अरे क्या, उसको इंसान को अगर प्रॉब्लम नहीं है तो उन किसी के दिमाग में क्यों डाल रहे हो? So I really feel that it's important, and in fact important for me also to do it, because अगर हम सब नहीं करेंगे तो वो norm बन जाएगा. So it's very important to keep breaking the norm. Even now जो जिस तरह से safety and security की बात चल रही है, अगर लड़कियां घर पे ही रहेंगी, that is a big problem, because then that is the message we are throwing out. कि हम इससे इस समय के बाद हम घर से नहीं निकलेंगे, और अगर एक लड़की निकलेगी then वो एक टाइप की लड़की हो जाएगी. So which is why even if it makes you a little uncomfortable, do it in groups. Getting out, I mean. और whatever it is, but डर के नहीं रहना है. चाहे वो लड़के से रिलेटेड हो, लड़की से रिलेटेड हो, माँ बाप, जनता, जो भी, whatever it might be, but वो डर में नहीं रहना है. क्योंकि पता है, मुझे लगता है अगर आप डरने लगते हो ना, तो फिर आप दबने लगते हो. And that is not all right. I have been blessed. I am what I am today because of the guy friends, boyfriends I have had in my life. And they've been wonderful people. And I have learned so much from them. And मेरी सोच भी उनकी वजह से है. क्योंकि अगर उनकी सोच अलग होती, every relationship leaves a mark. It impacts you. You are on a journey. It's your journey, but they are part of your journey. तो I think होने चाहिए वो, be it gay, be it however they might be, however they choose to be. I think it's very important. Heterosexual and मतलब जिस ये सब, वही मुझे वो टैग्स को हटा दो. वो इंसान कैसे हैं, वो सबसे ज़्यादा important होता है. Yeah. It's important to celebrate these things. You're absolutely right. Yeah. And मेरा एकदम opposite रहा है. All my friends have been female friends, and I also have the same experience, that I've learned a lot from them. I think it's made me slightly sensitive, slightly more understanding, some more empathy, which and I'm sure you've learned different things. And मेरे life में जब भी कुछ होता है, one of the first people I will go to talk to will be one of my female friends, to understand their perspective on it. You know. And on that, I want to ask you a question. I want your advice on something. Ooh, okay. Some dating advice. Have you ever given dating advice to any of your friends? I don't think many friends take dating advice from me. Why? Yeah, I don't know. I think हमारी वो dating या इस सब के बारे में बात ही नहीं होती है. अच्छा. वो पता नहीं, हम दुनिया भर की बातें करते हैं, especially about food and travel and books. But yeah, dating का, yeah. But I will try. Let's see. Okay. So I'm with somebody right now, and it's going really well. We have a lot of understanding. We've been together for a year and all of that. But we have a lot of arguments, right? उसमें क्या होता है? We are very different temperaments. I'm a very silent, calm, chill. She is the opposite. She's very excited. She's loud in the best ways, which I love. But when we end up fighting, वो ना mismatch हो जाता है. So even though, yeah, the intent is कि I just want you to understand me better, it doesn't end up matching, because एक बंदा थोड़ा सा loud है, एक बंदा थोड़ा सा silent है, उसको इसकी बात नहीं समझ आ रही, इसको उसकी बात नहीं समझ आ रही. What would you do in such a situation? How do you navigate a space like this? I think that's the beauty about human beings. कि सब एक टाइप के नहीं है. सब कुछ आपके स्वाद अनुसार नहीं होने वाला है. So I think one thing that helps me is to understand what the other person is trying to say, or what do they mean, because I think words are maybe sometimes the worst way for communication. क्योंकि हमें कहना कुछ होता है, पर वो निकलता कुछ और है. And especially मेरे साथ तो ये मतलब
बहुत होता है कि मेरा मतलब कुछ और होता है, एंड थैंकफुली माई क्लोज पीपल दे टेल मी और दे चेक विद मी दैट डिड यू मीन दिस, एंड आई एम लाइक नो 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 आई डिड नॉट मीन दिस, मेरा तो मतलब ये था. तो आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट टू, एंड समटाइम्स जब वो आप इमोशनली हाइटेंड वो होते हैं, तब आपको नहीं सुनना होता है कि दूसरा का नहीं समझना होता है कि सामने वाले का पर्सपेक्टिव क्या है. आपको लगता है भाड़ में जाए यार, मेरे इमोशंस भी तो सच हैं. आई एम गोइंग थ्रू व्हाट आई एम गोइंग थ्रू, व्हाई शुड आई अंडरस्टैंड व्हाट द अदर पर्सन इज, दैट पर्सन शुड आल्सो अंडरस्टैंड. एग्जैक्टली. बट व्हाट दैट अदर पर्सन शुड डू और एनीबडी एल्स शुड डू, वो आप छोड़ दो. आई थिंक आप क्या कर सकते हो, क्योंकि हमें अपने आप को ही चेंज करने में इतना टाइम लग जाता है. आई एम ट्राइंग टू बी अ सर्टेन काइंड ऑफ पर्सन बिकॉज आई वुड लाइक टू बी दैट पर्सन. टाइम लग रहा है ना मुझे, पर जब हम दूसरे से एक्सपेक्ट करते हैं तो हमें लगता है कि यू नो दिस पर्सन शुड बी लाइक दिस 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 दैट दैट दैट. सो आई थिंक हियर each other out and just knowing that you are on the same team, because then you're working towards the same goal. It's not like you want something else and she wants something else. In that situation maybe that might be the case, but ultimately तो आपको एक ही चाहिए ना. even you want her to be happy and she wants you to be happy, but you also want to be understood. वो बहुत ज़रूरी है. आई थिंक अगर वो सामने वाले को लगे कि अच्छा ये समझ रहा है या समझ रही है, तो फिर it becomes easier. And it's very important to be vocal यार. वो मतलब कई बार ना when you're too silent, it's not a good thing, I've realized. Yeah, because वो सामने वाले को लगेगा कि what is he thinking or what is he like, please communicate. Exactly. And वो भी फिर जब हम ज़्यादा अगर हम अपने मन की बात नहीं बोलते हैं तो वही वो एक दिन वो फटता है और वो ऐसी इतनी दूर की चीज़ें जब निकलती हैं तो that doesn't help anybody. Yeah, your silence is also an answer. So I completely agree with you. That's good advice. I'm gonna I hope so. This is what I'm gonna take from today's conversation, is not you versus me, it's you and me. You know, in relationships, and that's very, very important. What's one advice, and this is, we can start wrapping up now. What is one advice you would want to give young girls and guys who are watching you? Because I think there's so many people who look up to you. किताब कौन सी पढ़ रहे हो और एक्सरसाइज की नहीं की. एंड वाई? बिकॉज जब से मैंने एक्सरसाइज करनी स्टार्ट किया, इट्स नॉट अबाउट, it is about how I look, but more important than that, it is about how I feel. जब वो मैं एक सेट कंप्लीट करती हूँ ना, या जब पांडे जी मुझे बोलते हैं कि ये करना है, and when I'm able to do it, and with every set, when I get better, I just unlock another level. वो बहुत ज़रूरी है. Right. And even if I'm selling stuff on my Instagram or on your screens or wherever, I am doing that because मेरी तो वो रोज़ी रोटी है. I am still very mindful about what I choose. Right. ऐसा नहीं कि सारी जो inquiries आती हैं मैं उनको हाँ कर देती हूँ. Because I think there is some sort of responsibility that I want to have towards what I'm saying. But please know, don't fall for the marketing gimmicks. Don't fall for what the society, social media is trying to tell you. Think. You do not need more clothes. You do not need comfort to the level of, I don't know, वो थोड़ा discomfort बहुत अच्छी चीज़ है. करो. And दुनिया बचाने कोई नहीं आ रहा है. तो अगर दुनिया को बचाना है, वो आप ही को करना पड़ेगा. One thing that I feel is सबकी लाइफ का पर्पस अलग होता है. There is something that really bothers me. Like for example, what we are doing to nature. Yeah. हम लेते रहते हैं, ठीक है, एंड अब डेवलपमेंट होगा, चीज़ें बनेंगी, मैं भी गाड़ी से ट्रैवल करती हूँ, मैं भी फ्लाइट लेती हूँ. आई एम नॉट बीइंग अ प्योरिस्ट, बट व्हाट कैन आई डू टू एटलीस्ट फाइंड अ बैलेंस समवेयर? आई कैन सिंपल थिंग्स लाइक कैरी माई ओन वाटर. वो आप कर सकते हो. आप जो हम फॉर एग्जाम्पल गिफ्ट रैप करते हैं, ऑब्वियसली मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, वो पैकेज ऐसा होकर आता है, बट वो पेपर क्या होता है, वो फट जाता है. तो न्यूज़पेपर में कर दो, हैंड ड्रॉन कुछ कर दो उस पर, बिकॉज उसमें एफर्ट दिखता है. सो वट एवर योर थिंग माइट बी, बट प्लीज पिक अ थिंग, एंड दैट माइट बी गर्ल एजुकेशन, दैट माइट बी going to an old age home and doing a podcast over there. There might be a poetry thing that you might do, whatever it is. But एक चीज़ वो उठा लो जो आप दूसरों के लिए कर रहे हो. Because I promise you, जब आप दूसरों के लिए कुछ भी करते हो ना, तो वो आपको खुशी होगी.
एंड जस्ट द अदर डे समबडी वाज टॉकिंग अबाउट इट कि किसी बुक में था कि हम एक्चुअली दूसरों के लिए कुछ नहीं करते हैं, हम जो दूसरों के लिए भी कर रहे हैं ना वो हम अपने लिए करते हैं. एंड समवेयर आई एग्री बिकॉज इट मेक्स अस फील गुड. अगर आप किसी को भी नहीं बताओ, अगर आपने लेट्स से कोई अच्छी चीज़ की है, अगर आपने सड़क पे किसी को बढ़िया खाना खिला दिया, आप वो 10 लोगों को बताओगे, मे बी दे गेट मोटिवेटेड, पर अगर आप नहीं भी बताओगे ना, you will still feel nice. Because it's for yourself. Yeah. So I'm saying just do it for yourself. अभी instead of, I know मैं बहुत सारी चीज़ें बोल रही हूँ, but it's so easy to pull each other down. Yeah. It's so easy to write something on social media, not like, because we are being super choosy in giving our double tap also. बट अगर प्यार दे सकते हो, इफ़ यू कैन स्प्रेड काइंडनेस, प्लीज़ डू नॉट थिंक ट्वाइस अबाउट इट. हम बुरी चीज़ करने के पहले इतना नहीं सोचते जितना हम अच्छा करने से पहले सोचते हैं. तो अगर कोई भी एक अच्छा थॉट आता है, कोई डीड आता है, प्लीज़ कर दो वो, मत डोंट थिंक टू मच अबाउट इट. बिल्कुल. तो इस बात पे मैं एक अच्छा डीड करूँगा और आपको एक हैम्पर दूंगा विच इज़ फ्रॉम my muse. Lovely. Thank you. Hope you enjoy all their products and you like Ooh, there's a lot. whatever stuff. Yeah. Oh, nice. Very, very nice. Yeah. I have not used any of these products. I don't. Please tell us what you think about them. Okay. To Yes. happiness. Yes. Appreciate it. I really enjoyed this conversation. It was a lot of fun. I think this is the longest we've बैठ के बात की है हमने. I don't think इतनी लंबी हमने कभी ऐसे बात की है. एंड जब भी हमारी बातें हुई तो आई थिंक इट्स फॉर अ पीस. Something, yeah. तो काफ़ी एक चीज़ के बारे में होती हैं. हाँ जी. बट या देयर इज आई वुड वांट टू वर्क ऑन, आई थिंक माय नेक्स्ट पोइट्री आई वांट टू डू इट ऑन व्हाट बॉदर्स मी, व्हिच इज व्हाट वी आर डूइंग टू नेचर. Yeah. Yeah. Done. ये हमने भी रिकॉर्ड कर लिया. अभी we are going to start a petition for the next poem. ये तो चाहिए, ये तो करना है, बिकॉज अभी जब हम लोग एक वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी गया थे, तो अगेन गाड़ी में मैं बैठी हूँ और हम एनिमल्स को देख रहे हैं, एंड इट वाज बॉदरिंग मी सो मच कि हमारी जो गाड़ियाँ हैं ना, वो जो आवाज़ करती हैं इतनी ज़ोर से, एंड जो बेचारे जो एनिमल्स भी होते हैं, हम उनके घर जा रहे हैं, पर हमें चुप नहीं रहना है. मतलब यही, बट द थिंग इज़ कि लोगों को मजे वे में बताना है, क्योंकि ज्ञान किसी को सुनना नहीं है, मुझे भी नहीं सुनना है. सो नाउ आई एम जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट अ वे, सो इवन इफ द ऑडियंस, इफ देयर आर एनी वेज हाउ आई कैन टेल दिस बेटर टू पीपल, then I would love to know this from the audience.